अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगे लगातार मगर तेज से सरिश पर नजर, मगर दूसरे जाविये से मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम के, हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इस सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। बलोचिस्तान का 850 अरब हजम का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी तर्ज पर होगा। वजीर खजाना अमीर शुएब नौशरवानी बजट असेंबली में पेश करेंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती बैठक, पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर बातचीत। पीपल्स पार्टी की कमेटी में यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज अशरफ शामिल। हुकूमती कमेटी की नुमाइंदगी अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, सूबाई उमूर पर बातचीत। उधर वज़ीर आज़म से रहनुमा IPP ओन चौधरी ने भी मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल ने वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, कहा पंजाब में इंतज़ामी कमेटियों का हिस्सा बनाया जाए। पीपल्स पार्टी वज़ारतों के साथ इंतज़ामी कमेटियों की सरबराही भी चाहती है। पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असेंबली मुमताज़ अली चांग का अपोजिशन बेंचों पर बैठने का ऐलान। मुमताज़ चांग ने कहा कि मरीम नवाज का साथ तब देंगे जब वज़ीर आला पंजाब सादिकाबाद की आवाम को लाहौर के बराबर समझेगी। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फारूक सत्तार ने बजट को रिवायती करार दे दिया, कहा कि 77 साल से जो बजट आते रहे हैं वैसा ही बजट है, कब तक तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स लगाया जाता रहेगा। बगैर माइक लिए जमशेद दस्ती के मुसलसल बोलने पर डिप्टी स्पीकर बरहम जमशेद दस्ती ने कहा कि ये चोर हैं, बदमाश हैं, आप हमें फांसी पर लटका दें। डिप्टी स्पीकर बोले कि बदमाशी आप कर रहे हैं, आप चेयर को डिक्टेट कर रहे हैं। CPEC दो तरफा ताल्लुकात का अहम सतून है। दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। CPEC पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में 2 मंसूबों पर खर्च होगी। पहले मंसूबे के तहत 40 करोड़ डॉलर पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने पर खर्च होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के बाद मंदी। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स क्रॉस कर गया। पहले 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी, फिर 50 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 80,000 को छूकर 78,764 पॉइंट्स पर वापस आ गया। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। माहाना यूनिट्स के इस्तेमाल की बुनियाद पर बिल में 200 से 1,000 रुपए फिक्स चार्जेस वसूल किए जाएंगे। बिजली के नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। खैबर पख्तूनख्वा को बिजली 10 रुपए फी यूनिट फरोख्त की जाए। असेंबली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा करवा दी गई। हुकूमती रुकन फजल इलाही ने करारदाद में कहा कि जरूरत के मुताबिक पहले बिजली खैबर पख्तूनख्वा को दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ से ईरान के सफ़ी डॉक्टर रसा मीरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर असूली इत्तेफाक। फरसुदा फौजदारी कानून में तब्दीलियां ला रहे हैं। पार्लिमान और हुकूमत इस कानून में तरमीम से अवाम तक इंसाफ पहुंचाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का हाई कोर्ट बार रावलपिंडी के ज़ेरे एहतमाम ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। PIA की एक और परवाज 325 हजाज को लेकर लाहौर पहुंच गई। कौमी एयरलाइन 35,000 से ज़ायद हजाज कराम को सऊदी अरब 171 परवाजों के जरिए वतन वापस लाएगी।
सिंध असम्बली में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब, आसफा भुट्टो जरदारी ने केक काटा। वज़ीर आला मुराद अली शाह, निसार घोड़ो, कायम अली शाह, अवैस कादिर शाह, आगा सिराज तुरानी, सूबाई वुज़रा और MPs की शिरकत। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स को मअतल और गिरफ्तार करने का मामला। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। OPDs बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्कूल जाने वाले तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 अगस्त से बच्चे बैग उठाकर स्कूल नहीं जाएंगे। किताबें रखने के लिए क्लासरूम्स में अलग से कैबिन बनाए जाएंगे। पॉलिसी का इतलाक इस्लामाबाद के प्राइमरी स्कूलों पर होगा। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.94% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 23.78% तक पहुंच गई। रवा हफ्ते के दौरान 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। अयाज सादिक इस वक्त पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब कर रहे हैं। Initiative symbolized our shared commitment to regional prosperity and development through bilateral cooperation and regional connectivity. What is more, it was on that occasion when President Xi Jinping and my leader Mia Mohammad Nawaz Sharif, the then Prime Minister of Pakistan, jointly inaugurated the first ever 100% green parliament of the world, converting the solar needs of the Parliament of Pakistan to solar energy. This unique project symbolizes the sincere desire of our two nations to work jointly for a brighter, cleaner and safer future of our region. It is heartening to note that over the time, the scope of CPEC has since been expanded to include socio-economic development, poverty alleviation, agriculture and industrial cooperation, and special economic zones. Parliament of Pakistan and China, like our two nations, enjoy cordial relations, mutual trust, and practical cooperation. During my last tenure as Speaker of the National Assembly, I had the privilege of leading parliamentary delegations to China twice on the invitation of the Chairman of the National People's Congress. These exchanges have paved way for deeper bilateral ties and facilitated the implementation of CPEC projects through parliamentary oversight. We have actively stood by each other on every international regional parliamentary forum such as IPU, promoting our shared interests, sovereignty and stability. I have extended an invitation to the Chairman of the National People's Congress to visit Pakistan to further strengthen our parliamentary cooperation. Distinguished guests, over the years, CPEC has unfortunately faced malicious disinformation campaigns and attempts by extremist elements to sabotage its progress. To counter detractors of CPEC during my last term as the Speaker of the National Assembly of Pakistan, we initiated the Speakers' Conference on Regional Connectivity and Countering Violent Terrorist Extremism in 2017. China was our major ally, along with 4 nations that included Afghanistan, Iran, Russia, and Turkey. It still continues as a yearly function. In its historic declaration, our 6 nations unanimously declared that the connectivity and the countering terrorism were essential to regional prosperity, and the China-Pakistan economic corridor was the bedrock of this strategy. As I conclude, I would like to reassure our Parliament's continued oversight and proactive approach for CPEC and reiterate to our Chinese friend our unflinching commitment to the ironclad friendship that has grown into a sturdy tree with deep roots in the hearts of our two peoples. I thank you. I am very pleased to address the China-Pakistan Political Parties Forum and 3rd meeting of China-Pakistan Economic Corridor Political Parties Joint Consultation. I extend my heartfelt gratitude to the political leadership of People's Republic of China for continuous support, which has been instrumental in deepening bilateral cooperation and making China-Pakistan Economic Corridor a great success. Excellency, I would also like to say that your coming to Islamabad and presence here also is a testimony
of the relationship that Pakistan, the unique relationship Pakistan and China enjoy. First of all, I would like to extend our heartfelt appreciation to Chinese leadership for hosting the Prime Minister of Pakistan during his recent visit. It is pertinent to mention that the leadership of the two countries has complete consensus on bilateral matters. During the meetings of the Prime Minister of Pakistan and President Xi and Premier Li, both sides reached consensus to further strengthen our strategic partnership, enhance our economic cooperation, and revitalize an upgraded China-Pakistan economic corridor. The China-Pakistan economic corridor has significantly transformed Pakistan's development and promotes integrated growth. And I would like to place on record that nation of Pakistan can never forget that the Chinese side came to the rescue of Pakistan when Pakistan was facing 18 hours of power shortages in 2013, and no investor was willing to invest in Pakistan. It was the political leadership's decision to ask Chinese investors to come to Pakistan and help Pakistan overcome energy shortages, and that billions of dollars of investment turned around the economic and energy landscape of Pakistan. And to just give you one example how it has helped Pakistan, for 70 years we had coal buried under our ground, which was enough for 400 years to give us our cheapest energy. We could not tap that resource. It was CPEC that helped us unearth coal as a gold for Pakistan to produce the cheapest energy for Pakistan. The China-Pakistan economic corridor has significantly transformed Pakistan's development and promoted integrated growth. To further this progress, both sides successfully held 13th session of CPEC's Joint Coordination Committee on 24th May 2024. And I had the unique distinction and honor of co-chairing 10th JCC meeting out of 13 held so far. Two sides agreed to upgrade CPEC with inclusion of 5 new corridors, as Your Excellency mentioned, including a corridor of growth, a corridor of livelihood enhancing, a corridor of innovation, a green corridor, and opening up regional connectivity corridor. Pakistan's side appreciates vision of Chinese leadership to upgrade the second phase of CPEC with inclusion of these new corridors. I am very pleased to inform that these new corridors are in line with Pakistan's 5 E's framework, which focuses on developing Pakistan's export potential, transforming Pakistan's economy into a digital economy, focusing on environment, climate change, water, food security, fixing Pakistan's energy sector to give us affordable, efficient and green energy, and promoting equity and empowerment in our society. We are ready to work with our counterparts in China to define the scope and implementation plan on these corridors. Both sides are highly committed to this shared vision, and together China and Pakistan have embarked on a journey of shared dreams, working hand in hand to build high-quality development projects. And I must also say that the new phase will bring immense opportunities through business-to-business cooperation, industrial cooperation, relocation of industry to Pakistani SEZs, our partnership in agriculture, bringing new and modern technology from China to enhance our productivity, bringing our cooperation in sectors like science and technology, information technology, and above all, China's readiness and willingness to share its development experience in the spirit of Chinese wisdom, where it says, don't give your brother a fish, but teach your brother how to catch a fish. Excellency,
As we meet today, the political landscape is marked by uncertainties and complexities. The rise of protectionism, trade wars, and conflicts pose significant challenges to our world and our region. In this context, it is imperative to underscore the importance of China-Pakistan Economic Corridor and showcase it to the world how it serves as a beacon of stability and shared growth and prosperity. CPEC epitomizes the spirit of regional integration and economic interdependence. It shows how collaboration, rather confrontation, paves the way for sustainable development for overcoming the challenges we face today. CPEC enhances our strategic connectivity. The development of Gwadar Port positions Pakistan as a critical node in the regional trade. This port provides China with direct access to Arabian Sea, facilitating trade and energy supply routes as an alternate route for trade through land. And it is for this reason, Excellency, that the enemies of CPEC are working overtime to sabotage this project. But our determination and our friendship is far stronger than the designs of the enemies of CPEC, and we shall together defeat them and make CPEC a model of success. CPEC cannot be viewed in isolation as a bilateral initiative, but as part of a broader vision for regional prosperity. It has the potential to foster economic cooperation with neighboring and regional countries, contributing to regional development, prosperity, and stability. It creates a win-win scenario that transcends bilateral relations and promotes a more inclusive regional growth. Excellency, Government of Pakistan is aware of the security-related challenges to CPEC. This great bilateral initiative has been a target of propaganda as well as physical attacks by the enemies of both China and Pakistan. The Government of Pakistan has taken a number of measures to ensure foolproof security to Chinese personnel working in Pakistan. And I want to tell you that every Pakistani thinks that each Chinese national working in Pakistan is their national guest, and their security is more important to them than their own security. And we will not let any effort go in making sure that we provide the best possible security to all the Chinese nationals who are working in Pakistan. In the end, I would once again like to extend my sincere gratitude to you, Excellency, as a great friend of Pakistan, for your visit to Pakistan and to Chinese leadership for their continuous support and unwavering commitment to high development of CPEC. And let me conclude by saying that we have always said that the China-Pakistan friendship is higher than Himalayas. On 30th of May, I was at Chinese space station witnessing the launch of Pakistan's MM-1 satellite on a Chinese rocket. And when that Chinese rocket went into the sky with roaring noise, my heart said that today China-Pakistan friendship has transcended the heights of the skies. It is no longer higher than mountains. It has now reached the heights of the skies. Long live Pakistan-China friendship. पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान में मिनहसुल कौम इत्तिफाक पाया जाता है। पाक चाइना दोस्ती कि हमारे बाहमी सियासी इख्तलाफात से हमेशा बालातर रहा है और पाकिस्तान खित्ते में पुरअमन बकाए बाहमी और बाहमी ताउन पर मबनी ताल्लुकात को अहमियत देता है और उसकी तरफ पेशरफ्त की हिमायत करता है और तनाज़ात के पुरअमन और मुनसिफाना हल पर यकीन रखता है।
हम शुक्रगुजार हैं कि चाइना ने मसले कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की है और पाकिस्तान ने भी ताइवान के मसले पे हमेशा चाइना की गैर मशरूत हिमायत की है और इस तरह इलाकाई मसाइल पर दोनों ममालिक की हमाहंगी वो भी दोनों की तारीख के साथ अव्वल ता आखिर जुड़ी हुई है। पाक चाइना ताल्लुकात जिसका तज़किरा मुझसे पहले मुकर्रिरीन ने किया, ये हम सबका मुश्तरका सोच है और मुझे फ़ख्र है कि JUI पाकिस्तान और CPC पार्टी टू पार्टी दोस्त हैं और हम इस दोस्ती को बामानी बनाना चाहते हैं और दोनों मुल्कों के अवाम के लिए इसको फायदेमंद देखना चाहते हैं। इस तरफ जो पेशरफ्त हुई है इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट को और CPC को जाता है। जब 1995 में चाइना CPC ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली की खारजा कमेटी को दावत दी और नए इक़्तिसादी विजन पर हमें ब्रीफिंग दी और जब पाकिस्तान की तरफ से हमने ट्रेड वाया पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया और 7 रोज़ तक हमने मुसलसल हर मीटिंग में इस मौजू को डिस्कस किया और 7 दिन के बाद CPC के लेज़ान मिनिस्टर ने हमारे वफ्द को जो मेरी क़ियादत में था आगाह किया कि चाइना ट्रेड वाया पाकिस्तान के नज़रिए से मुत्तफ़िक़ है और उस वक्त उसकी बुनियाद पड़ी और उसके बाद जो हुकूमत आई उन्होंने उसी असास की बुनियाद पर इस तामीर को उठाया और मुझे यकीनन इस बात पर अफसोस है कि जहां आज उसे पाए तकमील तक पहुंच जाना चाहिए था लेकिन कुछ रुकावटें ज़रूर बीच में आई जो हमारे लिए भी और आपके लिए भी बायस तशवीश रही। लेकिन चाइना पाकिस्तान का जो अज़्म है CPEC के हवाले से ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाना, मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के हवाले से अपने ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाना, इस अज़्म के साथ हमने इन मुअत्तल मंसूबों को भी मुकम्मल करना है और इंशाअल्लाह मज़ीद आगे मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन की बुनियादें डालनी है, इनको आगे बढ़ाना है और चाइना पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक दूसरे के दोस्ती और ताल्लुक़ में अव्वलीन तरजीह साबित होंगे और इसके प्रोटोकॉल में इंशाअल्लाह कोई फ़र्क नहीं आने दिया जाएगा। मैं दिल की गहराइयों से जनाब मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट सेंट्रल कमेटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को खुशामदीद कहता हूँ और आपके पूरे वफ़द को खुशामदीद कहता हूँ और पूरा पाकिस्तान आपको खुशामदीद कहता है और इंशाअल्लाह आपकी ये नशिस्त और आपकी ये गुफ्तगू दोनों ममालिक की ताल्लुकात में मज़ीद गहराई पैदा करने, मजबूती पैदा करने और तरक्की के राहों पर आगे बढ़ने के लिए असास बनेगा। मैं इस्तक़बाल करता हूँ आपकी तशरीफ़ आवरी का और शुक्रिया अदा करता हूँ आपके उन नेक जज्बात का जो आपने दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से पेश किए हैं। Bismillahirrahmanirrahim. It is my unique pleasure today to be representing a political party which can be seen to have played the foundational role through its chairman Zulfikar Ali Bhutto many decades back to have sown the seeds of the plant which has grown in a tree which will, we hope, continue to prosper and give far more fruits to its two people than it is giving even at the moment. I also want to say that the coming generations of the Pakistan People's Party and all its political leaders have continued to continue to play the foundational role that I mentioned in the form of Mohtarama Benazir Bhutto and the previous Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari and of course the co-chairman of the party, President Zardari. It is interesting here to be sitting and viewing that each political party believes that they laid the seeds
for CPEC. And that in some ways demonstrates the unanimity of opinion and the focus that across the board, across all political divide in Pakistan exists for taking CPEC further and for believing really in the friendship between these two countries. I would want to also say over here that we are all experiencing the world going through what you have very ably described as turbulent waters and treacherous shores. And in these turbulent waters and treacherous shores, wherever we go in the Western forums representing Pakistan, we most of the time find ourselves representing not only Pakistan, but also having to represent China, because I think the world is not taking the rise or the rejuvenation of China as optimistically or as well or with as open arms and heart as we would have expected it to. As the world order is fracturing, I think the role that China plays and this friendship between China and Pakistan plays becomes even more important still. I look at ourselves as the frontiers sort of states to be holding on to some type of order, to be the spokespersons for multilateralism, because it seems that all the countries which seem to have laid the seeds for the order that existed, which was rules-based, do not like the rules as much when they work in favor of developing countries. We are experiencing this as we speak, and I am reminded of the article that I recently read in The Economist. As someone who's been reading The Economist for almost 20 years, I know that it is not very kind to China mostly. But when it writes about the Chinese scientific revolution and acknowledges that 19 years back when they first looked at the Chinese scientific world and asked themselves the question that is China going to become a scientific power, they say unequivocally the answer today is yes. And they also tell us that amongst the two top science and technology universities, no more lie in the Western world but in China. Now, as the science has no borders, this should be something that should be welcomed all over the world, but it seems that this is a worrying trend for the West. I think it is really important for us to try and allay those concerns, because we must prosper and grow together. Rationalism, logic, which has really been the cornerstone of China's rise, must continue to be the cornerstone or the basis and the foundation of how it navigates a very, very treacherous waters indeed. I say this, and I also want to just end by saying that we are all very proud of the fact that despite our many sort of differences that may exist, which do exist in any vibrant democracy, as we like to believe Pakistan, we believe that CPEC and Pakistan-China friendship and Pakistan-China ties are really even more important in these turbulent times than they have been ever before. I think whether we like to acknowledge it or not, the world looks at CPEC as the flagship program of the BRI. That is a reality that cannot be denied. How CPEC does reflects on how the vision of BRI unfolds in the world. So I think our joint commitment to making CPEC a resounding success is exceptionally important. And I just want to end by saying that what you mentioned as the Himalayan spring that Allama Iqbal referred to many, many decades back is seeming more like a winter to many regions of the world. It is on us to make sure that it is viewed as spring and the coming of a beautiful future for all of mankind, humanity, and for the world. And our preservation on the rules-based order, on holding international norms, I think is something that unites the two countries together, and this is a journey that we will have to continue as we go forward. We want to share our commitment to China and Pakistan relationship. First of all, I would like to express our sincere gratitude to the Chinese leadership here. Your visit today as an important moment in strengthening our ties. I may say today that the revival of CPEC today. MQM always believe in the potential of those initiatives that improve infrastructure, economy, and the vision of CPEC. We need to improve and enhance our mutual commitment for education and technology. This age of our is an age of possibility. So collaboration in
the IT, artificial intelligence, emerging technology, and we should start a massive, comprehensive program to train our youth. Pakistan is, as a young nation, about 150 million youth, a nation of 150 million youth. So we need your help for their training and to make them able to face the challenges. As a Pakistani nation, we are standing on a crossroad of our destination. It is up to us to choose it or lose it. And I think we choose the right option today. Pak Chin Dosti won soil. Friendship between the two countries is based on trust and cooperation. History is proof of this everlasting friendship. The CPAC, we believe, is a vision of this friendship, is proof of this friendship. The asset that Pakistan has, one of the greatest assets that this country has, is its geography. And I think CPAC connects very well with that asset. We have to make it successful. A long time has passed. We are seeing progress which is slow. We would hope that we are going to speed it up. The proof that we all are interested in this project, the proof that we have a great friendship between the two countries lies in the fact that today all the political parties are present only because of your presence here and because you invited us. I would like to say that friendship with China is the pivot of our foreign policy. It is the pivot, and the pivot means that it is the basic foundation, which is unshakable, and we'll always stand by our commitments with you. And most important for us is elimination of poverty. Your Excellency has said that we need 3 fundamentals: reform, development, and stability. We also believe that these are the 3 elements that we need to work on. And in terms of stability, this country, yes, we need stability against terrorism, we need political stability, we need understanding and cooperation. And we, on the platform of CPAC, at least are willing and ready for national causes to be of full assistance. We believe in the rule of law, and I think that for business, the most essential aspect is that there must be rule of law in existence, which means that the courts have to function independently, which means that contracts have to be honored, which means that commitments have to be fulfilled. And redress to the courts has to be effective and speedy. So we need to work on that basis. When I've had meetings with many of you independently, especially your visiting business communities, this is the most important thing they have stressed. And we believe that your first part, reform, includes reform of law also. In terms of what we stand for, I'm sure that your visit here is going to be lucrative. The smiles that you see are genuine, and you should enjoy our hospitality while you are here as well. It is my honor to address you today on the significant achievements of our strategic partnership with China. Our relationship with China goes beyond economic cooperation, rooted deeply in mutual respect, strategic trust, and shared vision for peace and prosperity. China's journey to becoming a scientific superpower proves the importance of sustained investment in research and development. From an emerging economy to a global leader in technology and innovation, China's progress demonstrates the power of vision.
collaboration and peaceful coexistence. In past few decades, China's GDP growth averaging about 9% annually is a testament to a sustained policy focus and investment in sectors like technology, education and infrastructure. China's evolution serves not just as a lesson, but as an inspiring blueprint that demonstrates what can be achieved with dedication and strategic foresight. The Belt and Road Initiative aims to bring economic prosperity and development across South and Central Asia by integrating these countries into a cohesive economic network. By creating new trade routes and facilitating investments, BRI seeks to foster economic growth, reduce regional disparities and promote mutual cooperation among participating nations. This initiative envisions a future of shared prosperity for our peoples and stability through economic interdependence. CPEC has been a cornerstone of Pakistan economic development strategy. Through China's unwavering support, we have successfully transformed our power sector, adding over 8,000 megawatts of electricity to our national grid. This achievement has not only boosted industrial productivity, but also reduced hardship faced by our citizens. CPEC is not merely a corridor of commerce, but a beacon of transformation, driving our nation towards growth and stability. China has been an invaluable partner to Pakistan, particularly in the field of education. Over 28,000 Pakistani students are currently studying in China, gaining invaluable knowledge and skills that they will bring back to our homeland. We appreciate China's ongoing support in this vital area and look forward to continuing our partnership to foster further education. यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज पुख्ती की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का बजट इजलास हुआ। बलोचिस्तान काबीना ने माली साल 2024-25 के बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। महकमे ख़जाना बलोचिस्तान के मुताबिक ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मिनरल एंड माइंस की तरक्की के मनसूबे नए बजट में शामिल। काबीना ने नई आपको बताएं पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम की मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा नई पेंशन स्कीम का इतलाक नए माली साल से नाफिज करने की तजवीज़। बजट में 3000 नई आसामियाँ शामिल भी की जाएंगी। एक ब्रेक शामिल करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर शुरू। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली बैठक में पावर शेयरिंग का फार्मूला, PSTP, पंजाब और जनूबी पंजाब के मामला पर गौर। बलोचिस्तान का 850 अरब हजम का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी तर्ज पर होगा। वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी बजट असेंबली में पेश करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात 22 जुलाई तक मुलतवी। नैब ने 2 गवाहान पर जिरह मुकम्मल कर ली, मजीद 2 पर इब्तदाई जिरह। अदालत की सुपरिटेंडेंट जेल को बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबाई अमूर पर बातचीत। उधर वज़ीर आज़म से रहनुमा IPP ओम चौधरी ने भी मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फारूक सत्तार ने बजट को रिवायती करार दे दिया। कहा कि 77 साल से जो बजट आते रहे हैं ये वैसा ही बजट है। कब तक तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स लगाया जाता रहेगा। बगैर माइक के जमशेद दस्ती के मुसलसल बोलने पर डिप्टी स्पीकर बरहम जमशेद दस्ती ने कहा कि ये चोर हैं, बदमाश हैं, आप हमें फांसी पर लटका दें। डिप्टी स्पीकर बोले कि बदमाशी आप कर रहे हैं, आप चेयर को डिक्टेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असेंबली मुमताज अली जान का अपोजिशन बेंचों पर बैठने का ऐलान।
मुमताज जांग ने कहा कि मरीम नवाज का साथ तब देंगे जब वज़ीर आला पंजाब सादिकाबाद की आवाम को लाहौर के बराबर समझेंगी। सहाफ़ी मुबश्शिर लुकमान के बाबर आजम पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात, कौमी कप्तान का मुबश्शिर लुकमान पर केस करने का फैसला। बाबर आजम ने अपने वकला से मुशावरत के बाद केस करने का फैसला किया। सीपैक दो तरफा ताल्लुकात का अहम सतून है। दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। सीपैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर असूली इत्तेफाक। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में 2 मंसूबों पर खर्च होगी। पहले मंसूबे के तहत 40 करोड़ डॉलर पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान कम करने पर खर्च होंगे। पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी खबर, पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनेंगी। मशहूर चाइनीज कार कंपनी BYD पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कारें बनाएगी। हब पावर कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली BYD से हाथ मिला लिया। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। माहाना यूनिट्स के इस्तेमाल की बुनियाद पर बिल में 200 से 1000 रुपए फिक्स चार्जेस वसूल किए जाएंगे। बिजली के नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। खैबर पख्तूनख्वा को बिजली 10 रुपए फी यूनिट फरोख्त की जाए। असेंबली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा करवा दी गई। हुकूमती रुकन फजल इलाही ने करारदाद में कहा कि ज़रूरत के मुताबिक पहले बिजली खैबर पख्तूनख्वा को दी जाए। फरसुदा फौजदारी कानून में तब्दीलियां ला रहे हैं। पार्लिमान और हुकूमत इस कानून में तरमीम से अवाम तक इंसाफ पहुंचाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का हाई कोर्ट बार रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। सिंध असेंबली में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब। आसफ भुट्टो जरदारी ने केक काटा। वज़ीर आला मुराद अली शाह, निसार खड़ू, कायम अली शाह, अवैस कादिर शाह, आका सिराज तुरानी, सूबाई वज़रा और MPs की शिरकत। स्कूल जाने वाले तलबा के लिए बड़ी खबर। 1 अगस्त से बच्चे बैग उठाकर स्कूल नहीं जाएंगे। किताबें रखने के लिए क्लासरूम्स में अलग से कैबिन बनाए जाएंगे। पॉलिसी का इतलाक इस्लामाबाद के प्राइमरी स्कूल्स पर होगा। PIA की एक और परवाज 325 हजाज को लेकर लाहौर पहुंच गई। कौमी एयरलाइन 35,000 से ज़ायद हजाज कराम को सऊदी अरब से 171 परवाजों के जरिए वतन वापस लाएगी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.94% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 23.78% तक पहुंच गई। रवा हफ्ते के दौरान 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गए। बानी PTI और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात से तकरीबन 1.25 घंटा जारी रही। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल और मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने सूबे में जारी बिजली की तवील लोड शेडिंग से पैदा होने वाली सूरत हाल बारे गुफ्तगू की। वफाकी हुकूमत से होने वाली बातचीत बारे भी बानी PTI को आगाह किया गया है। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात ज़हूर अहमद बलेदी ने कहा कि बलोचिस्तान का माली साल 2024-25 का बजट आवाम दोस्त होगा। इससे मुतालिक तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं हमाद अली से, जो कि इस वक्त ज़हूर बलेदी के साथ ही मौजूद हैं। हमाद, बताइएगा क्या कहना है इनका बजट के हवाले से।
हुकूमत अपना पहला बजट जो है वो पेश कर चुकी है। अब सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान 22 जून को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात ज़हूर अहमद बुलेदी साहब। इनसे जानते हैं कि सूबाई हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है, क्या ये आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं। इनसे जानते हैं, सर क्या कहेंगे इस हवाले से। देखिए, बलूचिस्तान में ज़रूरियात तो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप हर शुबे को देखें, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, खुसूसन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन लाइंस, आपके डैम प्रोजेक्ट्स और भी जो है दीगर प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि हम बलूचिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऐन मुताबिक काम करें और वो प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा तरजीह दें जिसका जो है मफाद आमा को ज़्यादा जो है फ़ायदा हो, और उसके लिए जो है हम दिन रात काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक बेहतरीन जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ले आएँ। और उसकी साइज़ अभी तक जो है तय नहीं है, लेकिन उस पर काम जारी है। तो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छे साइज़ का होगा और हमारी कोशिश होगी कि जो प्रोजेक्ट हम PSDP का हिस्सा बनाएं उनको बर वक्त मुकम्मल करके दें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि आने वाला बजट जो है वो अब बलूचिस्तान की आवाम के लिए एक बेहतरीन बजट होगा और आवाम दोस्त बजट होगा। अभी आपको बराह रास्त चलते हैं जहां पर साकदार इख्तितामी सेशन से खिताब कर रहे हैं। We made after, in 2014 when we had a very, sad incident, attack on a school of children in KP. So let me assure you, Excellency, that on the security side, we are absolutely, clear that terrorists would be brought to justice. I have also shared with you that, we have reached to the culprits. They are in custody. The process is on. We are trying to reach the last link, and so far the entire evidence unfortunately witnesses that it's been planned, it's been sponsored, it's been financed, and it's been actually monitored across the border. So which is a very sad thing. I think we both understand this is a sensitive issue, and the authorities are totally looking into this issue with the absolute responsibility, because I myself just visited during Eid holidays a project on which Jagran 2, Jagran 1 was done in 97-99. I was finance minister, 30 megawatts, and Jagran 2 is just under construction, is expected to be completed by June 2025. I was informed that our Chinese engineers brethren are working there, so I had the pleasure of meeting 2 days ago, visited the project, and I had a very good discussion with them. Excellency, as we approach the culmination of this remarkable event, I am filled with profound sense of all-enduring Pakistan-China friendship and its promising future trajectory. Our deliberations have reinvigorated our faith in the vitality of Pakistan-China all-weather strategic cooperation and partnership for the progress and development of our two countries, as well as for regional peace and stability. Excellency, the Pakistan-China relationship is more than a diplomatic norm. It represents an unshakable bond between the two countries based on mutual trust and cooperation. This fraternal brotherhood has withstood the test of time and is poised to flourish even more in the years ahead. Excellencies, the ironclad friendship between Pakistan and China was born in crucible of time. Generations of leaders, diplomats and citizens of our two countries made tireless efforts and endeavors to elevate it to the level of all-weather strategic cooperative partnership. Excellency, the launch of BRI and CPEC in 2013 added a new dimension to our multifaceted ties. Today, CPEC remains at the heart of our bilateral relationship. It is the central pillar of our government of the Prime Minister Shahbaz Sharif's development agenda and a pivotal conduit for Pakistan connectivity with China and broader region. Ladies and gentlemen, during Prime Minister Shahbaz Sharif's recent visit, our two countries agreed to upgrade CPEC with a particular focus on industrialization, operations of 5 new corridors, and implementation of important infrastructure connectivity projects, particularly the ML1, the railway project.
We are determined to build on the momentum achieved in phase 1 of CPEC and materialize our energies and on the high quality development of phase 2, which is going to be triggered very soon. The industrial parks and the special economic zones being developed under CPEC represent the next stage of Pakistan economic development. We have identified numerous opportunities to enhance trade, foster innovation, and drive sustainable growth. Our businesses, companies, and entrepreneurs are at the forefront of this endeavor, creating jobs, advancing technology, and contributing to Pakistan's and the global economy. Through collaborative efforts, we are not only boosting our own economies, but also setting a positive example for international cooperation in line with President Xi Jinping's Global Development Initiative, Global Security Initiative, and Global Civilization Initiative. Excellencies, as one of the architects of Pakistan-China friendship, the role of Communist Party of China has always been instrumental in creating a congenial political environment for further growth and strengthening of our ironclad relations. I am confident that under your Excellencies' inspiring leadership, the IDCPC would further enrich Pakistan-China Iron Brotherhood and deepen our multifaceted cooperation under CPEC. I look forward to working closely on behalf of Pakistan with IDCPC for meeting this noble objective. My dear friends, ladies and gentlemen, the political parties of Pakistan enjoy the trust of our people and represent their aspirations and dreams. We regard Pakistan-China friendship as a sacred trust which enjoys unanimous support across the entire political spectrum of Pakistan. And this has been displayed today in this event. The journey we have embarked upon together is one of the great promise and potential. The successful conclusion of third JCM and our consensus today would further galvanize our efforts to advance CPEC and Pakistan-China friendship. Excellency, under the ambit of this important mechanism, we look forward to further enhance our exchanges and cooperation, share our experience and insights, and meet shared objectives. It is my strong conviction that jointly steered by the political leadership of our two countries, Pakistan-China friendship would grow from strength to strength and would be elevated to a new pinnacle of the cooperation and collaboration. I sincerely thank all of my political colleagues here from all political parties in Pakistan for a united voice in endorsing the ironclad friendship of Pakistan and China, as well as supporting the CPEC. Let us move forward with renewed vigor and unwavering dedication, united in our pursuit of shared prosperity and enduring friendship. I thank you all, Excellency. God bless you. Long live Pakistan-China friendship. I thank you. इस्लामाबाद में पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म का इजलास जारी था, जहां पर सीपैक के हवाले से साख्तार गुफ्तगू कर रहे थे, इजलास से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और मज़ीद ये कहा गया कि वहां पर पाक चीन मुश्तरका जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने कहा कि सीपैक के हवाले से जो आइंदा आने वाले दिन हैं उसमें मज़ीद पेशरफ्त का आगाज़ किया जाएगा। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाज का निश्चर हस्पताल मुल्तान में डॉक्टर्स और नर्सिस के एहतजाज के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ओपीडी में हड़ताल के बायस दूर दराज से आए शहरी परेशानी से दो चार हैं। मज़ीद तफसीलात वजीहा वाहिद से जानते हैं। वजीहा वाहिद, मरीजों को मुश्किलात का सामना है, हड़ताल की गई है, ओपीडीज़ बंद है, क्या मामला है? बिल्कुल, इस वक्त मैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाज का निश्चर अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर पिछले 9 दिनों से नर्सिस की एहतजाज की वजह से जो मरीज़ है उनको मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना था। जबकि दूसरी जानिब अगर डॉक्टर्स के हवाले से बात की जाए तो डॉक्टर्स ने भी हड़ताल की हुई थी, जिसकी वजह से जो ओपीडी है वहाँ पर हड़ताल थी और ओपीडी जो है वो बिल्कुल जो है बंद थी। और इसी हवाले से जो यहाँ पर आने वाले मरीज़ और उनके लवाहिकीन थे उनको मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना था। जब इस हवाले से हमारी आने वाले शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि कोई सिंध से आया था और कोई दूर दराज
पास के इलाकों से जो यहाँ पर आए थे, और उनका यही कहना था कि जब एक जगह जाते हैं तो दूसरी जगह का वो कह देते हैं, और इसी तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह धक्के खाते फिर रहे हैं, मगर उनका इलाज जो है वो नहीं हो रहा। जबकि दूसरी जानिब जो ओपीडी में मौजूद जो फार्मेसी है वो भी बंद थी, तो इस हवाले से जो गरीब आवाम है वो ओपीडी से दवाइयाँ नहीं ले सकी, और उनको जो बाहर जो मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ से महंगी दवाइयाँ जो वो लेने पर वो मजबूर थे। जबकि उनका भी यही कहना था कि जो एहतजाज और हड़ताल है उसकी वजह से उनको मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना हुआ है। जबकि उनका ये भी हुकूमत से अपील थी कि हुकूमत जो है वो इस मसले को जो है वो जल्द अज जल्द हल करे ताकि गरीबों को जो है वो रिलीफ मिल सके। हाँ, बहुत शुक्रिया। DHK अस्पताल जंग का नया तामीर शुदा गुलाम नबी मेमोरियल ब्लॉक पहली बारिश भी न सह सका। ब्लॉक की बेसमेंट बारिश के पानी में डूब गई है और पीट्स वार्ड में बारिश का पानी जमा होने से मरीजों के लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना है। ज़ेरे इलाज बच्चों ने बेड्स भी बारिश के पानी में घिर गए हैं। और मज़ीद तफसीलात सफ्दर वसीम से हम जान लेते हैं। सफ्दर वसीम, बताइएगा, पहली बारिश भी ना ये हॉस्पिटल सह सका जो उसका बेसमेंट है पानी से भर चुका है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जंग में होने वाली तेज बारिश ने जो है हाल ही में तामीर होने वाले DHK अस्पताल के गुलाम नबी मेमोरियल ब्लॉक के मयार का जो पोल है वो खोल दिया और बेसमेंट में मौजूद बेड वार्ड, नर्सेज स्टेशन, डॉक्टर ऑफिस और मेडिसिन स्टोर जो है ज़ेरे आब आ गए हैं। DHK अस्पताल का गुलाम नबी मेमोरियल ब्लॉक निगरान सूबाई हुकूमत के दौर में जो है वो मुकम्मल किया गया, जो कि हाल ही में फंक्शनल हुआ था, क्योंकि पहली ही बारिश में जो है झील का मंजर पेश करने लगा है। और इस अस्पताल में बच्चों का वार्ड जो है, नर्सेज स्टेशन, डॉक्टर ऑफिस के साथ साथ जो है मेडिसिन स्टोर भी मौजूद है, जहां बारिश का पानी जो है दाखिल हो गया और बेसमेंट में जहां बच्चों के वार्ड में ज़ेरे इलाज। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रखना चाहिए अपनी गलियां, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपना पूरा सूबा इसी तरह हमें चमकाना चाहिए, इसी तरह हमें साफ़ रखना चाहिए। और ये आपकी रोज़ की ज़िम्मेदारी है, जिसको मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने ईद का ऑपरेशन पाया तकमील तक पहुंचाया, इसी तरह ये एक रोज़ की हमारी रूटीन में ये चीज़ शामिल रहेगी। और आज मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि एक वीलॉगर हैं रज़ी दादा, जब मैं आई तो हमने शुरू किया एक सुथरा पंजाब का जो एक मुहिम थी, तो उन्होंने कहा कि एक बेटी आई है, जिस तरह बेटियां घर साफ़ रखती हैं इस तरह वो बेटी आई है, वो सुबह अपना साफ़ रखेगी। तो कल उन्होंने लिखा हुआ था कि मैंने आपको कहा था ना कि बेटी जब आती है तो घर चमकाती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि ये पंजाब के अवाम की ये खिदमत अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखी है, जिसमें आप सबका साथ मुझे दरकार है, आप सबका जो सपोर्ट है वो मुझे दरकार है। इसलिए मैं तमाम जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स की जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और जो हमारे मिनिस्टर हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब, और जितने भी सैनिटरी वर्कर्स मेरे साथ बैठे हैं या मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं या जो मुझे इस वक्त नहीं भी यहाँ मौजूद, मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि इसी तरह सफाई सुथराई को जो निस्फ ईमान है, आधा ईमान है, उसको इसी तरह सुबह जब आप अपने काम पे आते हैं तो इसी जज्बे के साथ आप उसको शुरू करें और इसी जज्बे के साथ ख़त्म करें कि ये हमारा घर है, इसको हमने साफ़ रखना है। तो आप लोगों के लिए जो सहूलियात, एक आपको मैं ये भी बता दूं कि पंजाब में या किसी भी सूबे में वेस्ट मैनेजमेंट का कोई निज़ाम नहीं था। अब हम पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम ला रहे हैं और तमाम जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम मशीनरी भी ख़रीद के दे रहे हैं। हम उनको जितनी भी इसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है, वो सब हम आपको मुहैया कर रहे हैं ताकि आपके शहर, आपकी गलियां, आपके घर, आपके देहात साफ़ रहें। और पहली बार इस बार मुझे खुशी है ये आप सबके साथ शेयर करते हुए कि ना सिर्फ ये कि हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो शहरी इलाके हैं, वो न सिर्फ वहाँ पर सफाई हुई है बल्कि देहात के वो इलाके या रूरल एरियाज़ जहाँ पे कभी सफाई नहीं हुई, इस बार वही सफाई जो शहरी इलाकों में हुई है वो हमारे देहाती इलाकों में भी हुई है। तो देहाती इलाके के जो हमारे अवाम हैं उन्होंने भी एक अच्छा पॉजिटिव जो चेंज है उसको फील किया है। और ये हमारी जो कोशिश है इसको चलता रहना चाहिए। किसी भी वक्त, किसी भी दिन के किसी भी वक्त, हफ्ते में किसी भी दिन जो
हमारा पंजाब है उसको चमकता और दमकता रहना चाहिए। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके लिए जो आसानियाँ आपकी ज़िंदगियों में मैं ला सकूँ। मैं सैनिटरी वर्कर्स की बात कर रही हूँ जो इतनी मेहनत से तपती धूप में ऐसे मौसमों में अपना काम करते हैं, तो मैं जो आपकी ज़िंदगी में आसानी ला सकूँगी इंशाल्लाह मेरा वादा है कि मैं ज़रूर करूँगी। सबका बहुत वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब जारी था और सैनिटरी वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा था, उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा था कि किस तरह से उन्होंने ईद के दिनों में पूरे पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखा और सफाई को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि तपती धूप में ये एहसन इक़दाम जो कि इनकी जानिब से किया गया, ईद के मौके पर सफाई सुथराई का काम पूरा किया। पहली बार शहरों के साथ देहात में भी सफाई और सुथराई का काम हुआ है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से कहना था कि सफाई निस्फ ईमान है, इसी जज्बे के साथ हमेशा काम करेंगे। Parties Forum and the third JCM on CPAC was well attended. As you have witnessed, all political parties of Pakistan were invited and they were present. The presence of senior representatives of all major political parties of Pakistan in the event sent a strong signal of complete political consensus in Pakistan on the continued vitality of Pakistan-China friendship and its salience for regional peace and development. During this meeting, the two sides reaffirmed their commitment to CPAC projects and expressed firm resolve to continue joint endeavors for the upgradation of CPAC in its phase 2. We all reiterated the vital role of political parties of Pakistan and China for strengthening of Pakistan-China relations and for setting the future trajectory of our unique and historic ties. We also agreed to enhance the frequency of exchanges and interactions between younger parliamentarians and politicians of our two countries to pass on the legacy of Pakistan-China friendship to our future generations. Excellency has been very kind to announce that IDCPC will, in next 3 years, will sponsor 300 parliamentarians in 3 years from Pakistan to visit China in order to have more interparliamentarian interaction. The political parties forum and the third JCM on CPAC has injected a new impetus in the Pakistan-China friendship and CPAC. It is my strong conviction that the Pakistan-China ironclad friendship would continue to grow from strength to strength and would achieve new milestones as envisaged by the leadership and peoples of our two countries. Thank you, Excellency. Floor is yours. Thank you very much, Your Excellency. First of all, I'd like to thank you very much indeed for your tremendous hospitality. According to my delegation and myself, we do feel extremely the hospitality, friendship, and warmth from our Pakistan brothers and sisters. So this trip is really targeted on the following through of the consensus reached between our leaders. Prime Minister's visit to China for his meetings with President Xi Jinping and other Chinese leaders. I think that we all agree at the conference that the CPAC construction in the last, nearly 9 to 10 years have been a success. And China and Pakistan are committed to the continuation of the construction of CPAC for the common benefits of both our peoples. It's a success and it's beneficial to our peoples. And China is committed to the traditional friendship between our two peoples and our two countries. And China is also committed to the CPAC and also to the long-term strategic partnership between China and Pakistan. I think that against the backdrop of the global challenges and global changes, I think that the strategic value of the partnership and friendship between China and Pakistan is on the increase. So we have a lot of respect in the future relations between China and Pakistan, and I'm sure that will be ensured
with the support of the people. So our governments, the political parties, will continue to strive for stronger and deeper friendship and cooperation between our two countries. So we agree that there should be more and stronger interactions between our young people, between the think tanks, between the media, so that our peoples can really understand each other better, so that there's going to be a solid foundation for the friendship. And because of the COVID, which has been away for about 3 years, we need to catch up with the lost time. So we warmly welcome our Pakistan brothers and sisters to come to China for visits, and my department, as the Foreign Minister explains, would be very happy to host the young members, young leaders of the political parties here in this country to visit China, and so that to know more about China. And I thank you very much for the media, and you have a very strong role to play in cementing the friendship and developing the cooperation. I thank you very much. पाक चीन मुश्तरका मुशावरत इजलास से जारी था और जहाँ पर कहा जा रहा था, इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी बात कर रहे थे, नायब वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की हुकूमत और सियासी जमातों के दरमियान मज़बूत ताल्लुकात हैं और मज़ीद ये कहा कि CPEC से खुशहाली आएगी।